Yes, मेरी आवाज आ रही है? Yes. जी Okay. आ रही है टीचर। So I was telling you that in the beginning I was correct. Like I also forgot it. See, when we have to connect something with someone, so we have to see the end of the word, that which word we can connect. Like I would say to you that um for instance, I went with your brother. I went with your brother. How would I say in Arabic? أنا ذهبت with is مع ذهبت مع يا جدار is أخوك brother is أخي أخ is brother أخي I went with ذهب your brother. I'm saying I went तो with your brother. Zahabtu. अखूहा अगर गर्ल है तो अखूहा होगा। No, see. जो और बोला है ना अखू की अखू की, हाँ ठीक है, his brother is अखू की अखू का। Exactly. So this is the way. If here we are reading like Zahabtu ma akhuki. I went with your brother. Okay. So likewise, akhuki with your brother. Likewise, if I would say your woman, so I would say nisa'aka, nisa'aki, सही nisa'hum, सही सही। nisa'hum, their women. Our women, nisa'ana. Keep remember this tip. This might be also tip that whatever we are showing the possession, like it is mine, it is yours, it is his, or it is them, it is their. So we need to see, we need to think that at the end we attach the pronoun. Got it? If I would say we are women, and nahnu nisa, you are women, anti, antum, antunna, antunna nisa, antukum, sorry, what do we say? They are women. How do we say they are women? they are women وهي antunna نساء nisa they are women। they Antunna is for you. Sorry. Yes. Anti, antuma, antunna. Huwa, huma, hum, okay hiya, huma, hunna. हुन्ना So nisa, hunna. Nisa, hun. निसाहुन। अच्छा एक सिंपल हुन्ना निसाहुन, is a निसा See. Yes, निसाहुन्ना। see. We have to see the difference. Let me tell you. Wait a minute. Like for instance, see, we are seeing the singular and plural here. This is singular and plural. That I am saying we are women. You all are women. They all are women. So this is the plural I am telling you. But when we show the possession that they all are our women, you all are our women. So this is the difference we need to see. Hunna nisa, antunna nisa, nahnu nisa. Did you get the difference or not? अगर आप डायरेक्ट अपने बारे में बात कर रहे हैं तो आप अना नाहनु अंता अंती अंतुन्ना यूज करेंगे, और अगर आप किसी के रेफरेंस के हिसाब से बात कर रहे हैं मींस यू आर डूइंग विद सम रिलेशनशिप, उनका उनकी उनके, तो फिर आप जो है वो अटैच प्रोनाउन यूज करेंगे। Exactly. Like possession means concern. Like possession means I am telling that this is mine. Like I would say, as I told you
that I went with your brother. So I told you that I went with your brother. Your brother is yours. Something which is connected with someone. So then we have to check the end of the word. Like nisa'ana, our woman. Nisa'akum, nisa'akunna. If there would be the male and female in front of me, then I would say kum. But if only there would be women, I would say kun, like nisa'akunna. You all are, your woman, your woman. I'm saying the woman, all of the women that your woman. Some like for instance, 2 to 3 girls or female women are like are aside standing over here, and I am telling you all that these are your women. So I am saying your woman. Are you getting my point, Nida? If I'm uh, making you यस guys मैं जो मुझे समझ में आया वो ये है कि अगर डायरेक्ट हम बात कर रहे हैं हमारी मतलब अगर मैं कहूँ मैं औरत हम सब औरतें या हम दो औरतें तो हम जो है वो डिटैच प्रोनाउन यूज करेंगे और अगर मैं कह रही हूँ वो औरत उनकी औरतें या आप सबकी औरतें तो फिर हम अटैच प्रोनाउन यूज करेंगे exactly perfect. ठीक This is the way. Like Nisa'ana, our women, Nisa'akum, your woman, Nisa'hum, your woman. This is kum and hum for male. But if there would be female, so kunna and hunna. But if there would be male, female both, so we use kum and hum. Okay? Got it? Salati. टीचर अगर अगर हमें कहना हो वो औरतें तो फिर क्या कहेंगे हम? Yes, Nida. What do we say? Salati my prayers Salati No, Salat is Zainab, prayers and Zainab is Salati my asking. prayers Zainab is asking something. Can you give the answer? जैनब आपने क्या पूछा दोबारा रिपीट करेंगे आप प्लीज मैं कह रही हूँ कि अगर हम कहें कि वो औरतें तो फिर हम क्या कहेंगे? वो औरतें तो निसा हुन निसा। होगा निसा हुन हो जाएगा आई थिंक सो और या हुन निसा हो हुन्ना तो उनकी अन्निसा औरतें हो हो जाएगा जाएगा ना? हुन्ना निसा हो हुन्ना जाएगा निसा, हुन्ना निसा, यस ओके, हाँ, हुन्ना निसा हुन्ना होगा निसा। वो लेकिन अभी हमने जो बात की वो ये है कि मैं कह रही हूँ वो सारी मैं ये कह रही हूँ वो सारी औरतें तो मतलब आई एम हुन्ना निसा होगा आई थिंक सो जो मेरे हुन्ना हिसाब से निसा, बता एग्जैक्टली हुन्ना निसा, जी, वो सब औरतें। बस ये क्लियर करना था मुझे। ओके, हुन्ना हम्म निसा वो सब औरतें। और अगर मैं कहूँ वो सा लेकिन अगर मैं कहूँ उन सब की औरतें तो फिर निसा हुन्ना हो जाएगा एग्जैक्टली, दिस ओके इज द वे। ऑल राइट, ओके, सो सलाती। माय प्रेयर्स ओके, रसूलुहु, रसूलहु। टीचर वी कैन नॉट सी द चार्ट आप चार्ट दोबारा कर लेंगे ओके वेट, ये हैंग हो रहा है, एक सेकेंड। ओके, नाउ इट्स विजिबल। यस, यस इट्स विजिबल। ओके, रसूलहु, हिज रसूल, हिज रसूल, परफेक्ट। आहलिका, योर आपकी अहल आपकी तो मतलब सिंगल पर्सन जो मेल पर्सन है उसकी योर अहल पीपल, आपकी अहल एग्जैक्टली। नेमती, मेरी नेमत है मतलब नेमत इज सिंगल एंड नेमती आर द ब्लेसिंग्स माय ब्लेसिंग्स माय ब्लेसिंग। इब्नी, इब्न इज बेटा एंड इब्नी इज माय सन इब्नु, इब्ना का। योर सन योर सन, ओके, इब्नाइना, आप सबके आवर सन, हमारे, नाना आवर सन, आपके आवर बेटे। सन सॉरी, हमारे बेटे, हमारे बेटे। हमारे बेटे हाँ एग्जैक्टली, हाँ सही हमारे बेटे इब्न अबनाइना इज सिंगुलर एंड इब्नाई, इज बेटे, प्लूरल। ओके, हम्म एंड इब्नाइना
Abnaina is our son. हम Ayatina. हमारी आयतें या आवर वर्सेस. हमारी हमारी निशानी. निशानियां. Yeah, हमारी निशानियां. perfect. Amwaluhum. उन सब के अमाल. Perfect. जज़ाउहुम ये तो हो गया था. अच्छा, ओके. ज़ुर्रियतिना. जुर मीन्स औलाद. ओके ना. हमारी औलादें. हमारी औलाद. Perfect. So this is the way, see, if we read the Quranic words, so we can easily understand. Here we can do one more exercise. Try to add them, add these attached pronouns with these three words. Yes, Zainab. qablu is the word. Then qabli, qablika, qablina, qabluka, qabluna, qablukum, qabluhu, qabluhum. Okay, what does it mean? Qabli. Qabl means before. Exactly. कबली मुझसे पहले, कबलू का तुमसे पहले, कबलुना हमसे पहले, कबलुकुम तुम सबसे पहले, कबलुहु उससे पहले, कबलुहुम उन सबसे पहले. ऑल राइट. लाइकवाइज किताबी, किताबु का. नाउ निदा, नेक्स्ट. कौमी, कौमिका, कौमिना, कौमिकुम, कौमिहु, कौमिहुम. कौमी, में कौमुका, कौमुका. कौमी, कौमुका, कौमुना, कौमुकुम, कौमुहु, कौमुहुम. मेरी कौम, तुम्हारी कौम, हम सब की कौम, तुम सब की कौम, उसकी कौम, एंड हम नहीं उन सब की, उनकी कौम, उन सब की कौम. परफेक्ट. नेक्स्ट. दीनी, दीनी, दीनुका, दीनुना, दीनुकुम, दीनुहु, दीनुहुम. दीनी मेरा दीन, तुम्हारा दीन, हम सबका दीन, आप मतलब तुम सबका दीन, उसका दीन और उन सबका दीन. Perfect. So like this, we have to do a lot of practice. So automatically we understand the things. Okay. नजर नहीं आ रहा है. Wait a minute. So far, is there any question or confusion? So you can ask, both of you. नहीं कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन वही आपकी बात की प्रैक्टिस करोगे तो जो चीजें हैं ना वो क्लियर होगी. मतलब हम तो ये बस है कि प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत सारी है ना ये जो जैसे हम ये डिटैच और अटैच करते हैं ना, तो उसमें वही बातें कनेक्शन करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है. तो वो बेसिकली कंफ्यूजन नहीं है, दैट इज ऑल लैक ऑफ प्रैक्टिस. आप कैन से कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे यू कैन नॉट. वी नो, बट हाउ टू पुट इट टू अ पर्टिकुलर प्लेस, वी रियली नीड प्रैक्टिस. Exactly, and this is what I told you guys, that you have to regularly, you have to put at least 1 or 2 audios. If it will take hardly 5 to 10 minutes, I think इससे भी कम minutes लगेंगे if you guys can do. So verse by verse, if we will discuss in the group, so automatically we understand the things and we do a lot of learning. We take a lot of learning through this process. Okay. So, yes, my screen is visible. I hope you guys can see this paragraph. Yes, Zainab, can you read? Iqra. Now, taraka sabitul Iraq, وانتقل إلى جدة. هو الآن مدير الشركة في جدة.
साबितुन सईदुन फी जुद्दता मा उसरती जुद्दतु मदीनतन कबीरतन व जमीलतन जिद्दा यज़हबु साबितुन मा उसरत इला शतील बहरी यौमल खमीस वयब्दी यौमल जुम्मा फी मक्का यज़हबु इला मक्का हुआ व उसरतुहु यौमल जुमअती सबाहन तस्तगरिक रहलतु मिन जुद्दता इला मक्का साअतु तकरीबन युसल्ली साबितुन व उसरतुहु सलातल जुमुअती फिल मस्जिदिल हराम व युसल्लिल अस्र अयदन हुनाक बाद सलातिल अस्र यज़हबु इला बैतिही फी जुद्दा. Okay, so can you tell me the translation? तरका साबितुल इराक साबित साबित left from Iraq. Wantaqala ila Jeddah. He transferred to Jeddah. He shifted. Huwal an shifted. Okay. He shifted to Jeddah. Huwal an Mudiru Sharakati fi Jeddah. He is now a manager in a company in Jeddah. Okay. साबितुन في جدة مع أسرتي ثابت سعيد in جدة مع ثابت lives Thabit is Saeed happy. happy, yes, happy in Jeddah with family, with his family. Family. Yes. جدة مدينة كبيرة وجميلة جدة. Jeddah is city is big and beautiful, very beautiful. يذهب ثابت مع أسرته إلى شاطئ البحر. He Sabit goes with his family to beach. Beach شاطئ البحر is beach. يوم الخميس on Thursday and and leaves on Friday to Makkah. يذهب إلى مكة. He goes to Makkah. يوم الجمعة in Makkah. Sorry, he is in. He goes to Makkah with his family on Friday morning. تستغرق رحلته. The distance है ये I think from Jeddah to Makkah is 1 hour almost. Tastaghriqu means it takes. It takes, okay, yes. It takes from Jeddah to Makkah almost 1 hour. Usually he prays, Sabit prays with his family, and his family. Sabit and his family prays Salat al-Jumu'ati, Friday prayers in Masjid al-Haram, and he prays Asr also there. After Asr prayer, he goes to his house in Jeddah. Good job. Okay, so now Nida, can you make the sentence that तुम आप इस तरह से बनाएं, you can make sentence that I left the market with my sister at 5 o'clock. तरक्कु नहीं एक मिनट तरक is it's the root word is tarak na. Exactly. So Taraktu, I right? left means taraku. Taraktu. Asuk. Taraktu is correct. See, let me clear to you. When we talk about past, taraktu is I left, tarakta is you left for male, tarakti is you left for female. Only Arab difference is there.
For me, you male and you female. For he and she, for he is taraka and for she is tarakat. Keep remember, okay? So you are correct. Taraktu. I left the market with my sister at تركت السوق مع أختي 5 o'clock आपने कहा ना مع Ma ساعة مع أختي at 5 o'clock ना ठीक है ना एड आई एम सॉरी एड को आप एड के लिए जो अरबी वर्ड है आई कैन नॉट कनेक्ट विद इट Fee, usually we use fee फी to ही tell यूज the करते हैं अच्छा time. في ساعة الخامسة Fisar, في الساعة الخامسة perfect. Repeat it again. हाँ okay. تركت السوق مع أختي في الساعة الخامسة الساعة الخامسة في الساعة في الساعة الخامسة sorry Yeah, khamisa are both correct. في الساعة الخامسة Okay. Okay, Zainab, now you can make the sentence that my brother left the Jeddah My 2 brother years left Jeddah. ago. 2 years ago. My brother. Okay. Akhi. Okay. Taraka. Akhi. Akhi Taraka Jeddah. Kabla 2 years. Years. 2000. 2 years ago. Ago. I think it's Kabul. And 2 years सना is. साल को सना कहते हैं 2 years if I'm not wrong तो वाहिद इसनैन Qabla सना sanataini. सनतैनी okay Qabla Sanataini. Okay. Sanataini. 2 years Sanataini. Qabla Okay. sanataini. All right. 2 years ago. Akhi If it would be Taraka Jeddah Sanataini. Qabla Qabla Sanataini. sanataini. If it would be 3 years ago, so it would be qabla salasa sanawat. ओके 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 Qabla ओके salasa sanawat. लेकिन अगर हम कबला वाहिद इसनैन Qabla sanataini. इसनैन सना कहेंगे तो क्या ये जब अगर Yes. हम ऐसा कहेंगे तो ये गलत कंसिडर होगा No, not wrong, but as per the rules, do you remember the chart Musliman, Muslimun, Muslimun, Musliman, Musliman, Muslimin, Muslimani, Muslimaini, Muslimaini? I told you if there would be two, we are talking about anything two in the form of two. So instead of using a Sani or a Sania, we or Wahid Isnan or Isnan, we use Ani or Aini. Like daqiqataini, 2 minutes. Sa'ataini, 2 hours. Sa'ataini. If I would say I left before 2 hours, so I would not say isnan hours. I would say sa'ataini, qabla sa'ataini. Taraktu qabla sa'ataini. Got it? ठीक कबल Well, सातैन do you ओके remember लेकिन दो घंटे पहले अगर मैं 3 घंटे का बोलूंगी तो फिर मैं क्या कहूंगी Salasa सलासा Salasa sa'atan. Salasa सलासा sa'atan. सलासा साअतन अगर 2 बजे का कहना हो तो फिर क्या कहेंगे 2 घंटे पहले के लिए आपने कहा ना कि सना तैनी नहीं क्या बताया था आपने 2 घंटे पहले के लिए Listen, if at that in that sentence we were talking about sana. Sana is year. So I would say sana taini. It means 2 years. Saga means hour.
So if I would say 2 hours, so I would not say isnan, wahid isnan, 2 hours, not in the form of this. I would say sa'ataini. If I would say 2 minutes, I would say daqiqataini or daqiqatani, sa'ataini or sa'atani, sanataini or sanatani. If you have to see the chart, let's go through that chart as well. I guess I don't know you guys remember that chart or not. Muslimun, Musliman, Muslimin, Muslimani, Muslimaini, Muslimaini. If you remember, I told you this chart Yes, is yes, we for the remember. आपने बोला था, सही है, आपने वो ये चार्ट याद, हाँ सही कह रहे हैं आप, कि जो है ना अगर हम we have to see the Arab. If we would have nasab, then we would do the ani. And if we would have sorry, rafa, nasab and jar. If we would have rafa, means pesh, dhamma. Then afterward would be ani. But if there would be kasra, sorry, fatha, then fatha or kasra both. So then it would be aini. Wait. Where is the chart? I shared the chart here, right? Yes, you shared. Yes, you shared. And we have practiced it also, but now Right maybe we now, are I don't know where अच्छा it is. अगर हम ये कहेंगे कि I left hours before, मतलब in hours में we are not mentioning the number of hours, Yes. तो फिर उसके बाद होगा I left hours before means तरकतु साअतुन Taraktu sa'atan. Sa'at. साअतुन mean because it's multiple, it's not mentioned, मतलब अगर आप 3 या 4 घंटों की बात कर रहे हैं तो you are mentioning the hours, और अगर हम कहेंगे मैंने 3 घंटे पहले I left 3 hours before, Salasa तो तब भी sa'atin. सलासा साअतुन. Exactly. The sa is not will not come in this way. Sa will come in the form of plural, like sa, because we are talking about sa. Sa'atun means because Exactly. we're talking about 3 hours, so we're supposed to convert the hours also into multiple. So it will be salasa sa'atun or arba sa'atun or khamsa sa'atun. Exactly. Wait a minute. I don't know what's wrong with it. Let me share it again. Yes. See, ये पता नहीं, I don't know, ये लिख क्यों नहीं रहा है pencil. Marker is not working. Okay. Okay, it's red, that's why it's not there. Color. All right, so leave it. See, एक second. I don't know, my laptop is not. आप Zoom पे देख रहे हैं, I think so आपने ना WhatsApp पे इसको send किया था. Yes, I was checking on WhatsApp, but I couldn't find it out. Wait a minute. See, Nida, if I would ask multiple years or multiple multiple hours, so it would not come like this. Sa'atan. Sa'atan use only for singular. We will use sa'atin. Ain, alif, then. Salasa sa'atin. Okay? All right? अब बताएं, कोई confusion still है? Is there any confusion still? No, it's not. Yeah, Zainab? Is there? it's fine, teacher. Okay. मैं चार्ट ही देख रही थी ग्रुप के अंदर, तो क्योंकि शेयर हुआ है, निदा ने भी शेयर किया था, उन्होंने प्रैक्टिस की थी, तो Exactly. ये है चार्ट में, मैं आपको सेंड करती हूँ. काइंडली इस चार्ट को अपने साथ रखें, इसको रिपीट करें बार बार, because it will work. Otherwise, we will not we will not remember whenever we have to say what. Okay, if there would be 2 hours, sa'ataini. If there would be 2 years, sanataini. If there like real,
if I would say 2 riyal, so I would not say isnan riyal. I would say riyalun, sorry, riyalani or riyalaini. All right. Hmm. Aini and ani, we need to remember that for dual, we need to remember this chart. Muslimun. If there would be nasab, Muslimun, un, Muslimani, Muslimuna. Muslimani is for dual in nasab and Muslimuna is for plural, una. All right. And una words, we will also we will learn una words are a lot of times given in the Quran. Like we have seen that in the chart as well. So we need to see there are a lot of things which are going on in our head, but we, due to the lack of practice, we are not supposed to remember all of the things all of a sudden. Okay, Nida, can you make the sentence that I spent, not spend. I'm talking about past. I spent holidays. I spent holidays in Murray. I spent holidays in Murray. स्पेंड के लिए वर्ड बता देंगे आप मुझे? मुझे Yeah, मेरे here दिमाग में नहीं है। this you can say yaqdi. यकदी, ओके यकदी, तो आपने कहा Yaqdi is स्पेंड यानी fi'l mudari. पास्ट है ये। हाँ, यकदी इज फिल मुदारे, ठीक है, तो इसका जो रूट वर्ड है वो कदी होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, Exactly. ठीक है ना? तो कदी, कदी इज रूट वर्ड, तो कदी, कदी Qadaitu. कु, कदई तू, ता, कदई तू, एक मिनट, ओके, कदई तू, आई स्पेंड हॉलीडे, कदई तू, आपने दोबारा उर्दू में जुमला बोलिएगा। I spent holiday in Murray. कदई तू उतला फी मरी। Naam. Qadaitu al-utlata fi Murray. Perfect. And if I would say Zainab, she spent Saturday. She spent Saturday in the market for the shopping. This is Fele Mudare, by the way. No, she spent. It's also Fele Mazi. Okay. She spent Saturday in the market for the shopping. قدي हाँ قدي फीमेल के लिए See, yaqdi is Fele Mudare. All right. Aqdi, yaqdi, naqdi, taqdi, yes taqdina, yaqdi. All right. So now we can make the Fele Mazi. Like Nida said, qadaitu for me, qadaita for you. So yes for he or she, what do we say? قديتي No. قديتي फॉर शी Qadaiti इज is you. कदईत, Qadat, कदईत हो जाएगा। qadat. See, हाँ, कदत, zahaba, ओके, qada. हाँ, Qada, कदत, qada हाँ, for he and qadat for she. Zahabat, qadat, zahabat, fa'alat. We have to see the pattern. लेकिन टीचर, oh yes yes हाँ, قدأت कदईत, yes कदईत, आपने قديت कदईत बोला ना, कदईत, Qadat, قديت da is for कदत, male, he and qadat is she. लेकिन देखिए, कदई के आखिर में या आ रहा है, तो इस या को हम क्यों नहीं पढ़ रहे? قديت कदत अगर आप हमारे पढ़ेंगे तो इट्स काफ, यानी दौद, और काफ दौद ता होता है, लेकिन हम इसको जो रूट वर्ड है वो यकदी है, तो कदत क्यों पढ़ेंगे हम इसको? या इसका क्या हम हटा قدي है देंगे? रूट वर्ड यकदी नहीं है कदई है قدي ना? है तो अगर आप रूट वर्ड को कन्वर्ट करेंगे तो आखिर में ता होगा, या तो साकिन ता होगा, या ता जबर होगा, या ता जेर होगा, ऐसे ही होगा ना? तो कदई होगा, कदत कैसे होगा? Qada मतलब मैं ये समझने की means कोशिश कर रही हूँ। I don't know what do we say. This is the pattern which we have to follow, like qada.
Qada is he spent. Qadat is she spent. So we So have that to this see the या हम नहीं pattern. पढ़ेंगे, we- या हम नहीं पढ़ेंगे इसको, या नहीं क्योंकि कदत आप लिखेंगे, हाँ या, क्योंकि या रिप्लेस, अगर आप कदत लिखते हैं तो काफ दौद ता बनता है, ठीक है ना, But और अगर आप I कदत ता understand what you want to say, but basically we have to follow the pattern, and if we will not follow the pattern, so it would become kadai, kadai for he and kadait for she. So it would not be as per the pattern. You know, the fi'l ओके madi ओके pattern is qada and qadat, zahaba and zahabat, akala akalat, daraba darabat, fa'ala fa'alat, नहीं नहीं, like this. पैटर्न तो मैंने देखिए जहाब में तो वर्ड बा, लास्ट वर्ड ही बा है ना, ठीक है ना, उसके साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं ता को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरा Yeah, सवाल ये है कि exactly. यहाँ पे, I know हाँ what you want to say, हाँ, but this is the this is the thing which we have to ना see. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, कि मतलब ऐसा भी Yeah, होता है, यानी जैसे अगर आप exactly, मुझसे बात करें तो इट्स एक्सेप्शनल केस ना, कि हम exactly. या का वर्ड हट को हटा रहे हैं। तो अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये होगा कि क्या वो तमाम वर्ड्स जो या पे एंड होंगे उनका या हटा दिया जाएगा? Not necessary. That I नॉट told you नेसेसरी, earlier ओके that we have the exceptional things in Arabic. ओके As ओके। per not, it's not just like other languages, right? Okay, so qada and qadat. Okay, now Zainab, you can make. qadar yawmal saba fi sawq Yawmus, yawmus saba yawmus you sab. have said about Saturday na sabt, oh sorry sabt, yawmus sabt fi sawq और आगे क्या कहा था आपने? For the shopping. For shopping लिश्तरो इस तरह करके कोई वर्ड होगा Nida, can फॉर you शॉपिंग। give it a try? आई थिंक सो, शॉपिंग जो मेरी है वो सूक से ही रिलेटेड है कुछ, तसुक For what do we use in Arabic? For फॉर, I'm sorry, perfectly. लिल लिल नहीं करते क्या? लिल लिल लिल, हाँ लिल, Litasawwuk. लित्तसव्वुक, okay, tasawwuk is shopping and littasawwuk is for shopping, हाँ Litasawwuk is shopping and tasawwuk is shopping and li is for li only for li. ली, तो That's totally littasawwuk li. is for shopping। Exactly. And Zainab, you were also correct. Ishtari is also buying, but we should know that wherever we should use which word, as you know that with the multiple words in similar meanings, we know that which word would be feasible for which situation or which sentence, right? यस फॉर Okay, so शॉपिंग इज द वर्ड तसव्वुक yeah, तसव्वुक exactly. Tasawwuk is shopping. So if I would say I want to buy